Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women's College, and this is my YouTube channel, Adarsh. Now, today's topic again is, exactly like the last one, that is one day before I have got this topic, this request rather, to discuss the short answers or the short answer questions rather for the students of semester 1 MSc, the examination of which is at exactly in the air just after 1 or 2 days. So this request I have got received today only, and it's very clear कि बहुत ही जल्दीबाजी में मुझे ये आंसर करना पड़ रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशंस कहीं से, और मैं ज़्यादा कुछ देख सकूं और कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकूं अगर उनका कल परसों में एग्ज़ाम है। तो नेचुरली अब मैं प्रिपेयर करके उनको क्वेश्चंस दूं और तब वो प्रिपेयर करें, ऐसा नहीं है, बट दे हैव रिक्वेस्टेड टू गिव सर्टेन क्वेश्चंस which carry about 5 marks. So here is the syllabus in my hand. Syllabus मेरे हाथ में है और I'm going on taking the syllabus points of syllabus one by one, and certain questions which may be expected for short questions. Objective questions को डिस्कस करना नहीं के लिए इतनी जल्दी हो ही नहीं सकता है। तो बट अगर ये आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर सकें इमीडिएटली, तैयारी तो अब आपकी हो ही चुकी होगी, आपको जस्ट फाइंड आउट कर लेना है, पिक कर लेना है कि इसमें से कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कुछ लाइंस और कुछ पॉइंट्स, और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस के लिए. सो टू बी वेरी क्विक, first topic is synopsis of diversity of chordate groups. So this synopsis of diversity, as you know, it mainly includes the classification. The chordate groups में आते हैं protochordates, fishes और pieces, then amphibia, reptiles, birds and mammals. Synopsis of diversity में question, short questions के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब आप क्लासिफिकेशंस पढ़ रही हैं, तो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी ऑफ द ग्रुप्स, दैट इज फिशेस तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिशेस में आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेमिकॉर्डेट्स आ सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोकॉर्डेट आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफालोकॉर्डेटा आ सकता है. सिफालोकॉर्डेटा में एम्फियोक्सिस एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, तो कनेक्टिंग लिंक, एम्फियोक्सिस और कनेक्टिंग लिंक एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. एम्फियोक्सिस और लिविंग फॉसिल भी बहुत बार क्वेश्चन में आता है, दो नॉट वेरी मच पॉपुलर. लिविंग फॉसिल वाला टॉपिक डिस्कस आप लोगों को, अगर आपने अभी नहीं किया तो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन, बट कनेक्टिंग लिंक में आप जरूर जाइए. हेमिकॉर्डेटा में बैलेनोग्लॉसस, हेमिकॉर्डेटा का इवोल्यूशनरी और टैक्सोनॉमिकल पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि हेमिकॉर्डेटा को एक बहुत यूनिक पोजीशन रखा गया, वेदर इट इज अ डाइवर्जेंट ग्रुप, वेदर इट इज अ ब्लंटली एंडिंग ग्रुप, whether it is non-chordate, whether it is the chordata, or whether it is having a special position in the evolutionary tree. इस पे आपका very much expected question हो सकता है. यूरोकॉर्डेटा में why it is called यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा के characteristics हमेशा आप short question में expect कर सकती हैं. यूरोकॉर्डेटा में एक बहुत important phenomenon होता है retrogressive metamorphosis. तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है. फुल क्वेश्चन के लिए तो ऑलवेज एक्सपेक्टेड है ही, शॉर्ट नोट में भी रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यू कैन एक्सपेक्ट, और उसमें शॉर्ट नोट में अगर आता है 5 नंबर का आता है, तो आई विल सजेस्ट यू मोर एम्फसाइज मोर ऑन द डायग्राम्स, वेल लेवल्ड डायग्राम्स फटाफट बनाती जाइए, किस तरह से टिपिकल एसीडियन टैडपोल लार्वा में क्या कॉर्डेट कैरेक्टर्स हैं और कैसे वो खत्म होते जाते हैं, और जब हैडमानिया में कन्वर्ट होता है, एसीडिया अडल्ट एसीडिया में कन्वर्ट होता है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Then comes the protochordata characters, very much important, retrogressive metamorphosis, or then tadpole larva, tadpole acidian tadpole larva या amphibian tadpole larva, दोनों में कोई भी आ सकता है. कंपैरिजन आ सकता है. टॉर्नेरिया लार्वा
is always expected for the hemichordata में. Then fundamental chordate characters. This is very important character question. Short question के लिए fundamental chordate characters को किन forms में किस species में पाया जाता है? That is always a very much expected question. Short question में fundamental chordate characteristics. Then is the fishes. Fishes में scales पे short question जरूर आ सकता है. Parental care and fishes पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है विथ या किसी एक एग्जांपल के साथ. फिश का कोई एक एग्जांपल रहेगा. दिस दिस द पेरेंटल केयर इन दिस ग्रुप ऑफ फिशेस. देन रेस्पिरेशन इन टीलियोस से शॉर्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज एयर सैक्स इन टीलियोस. टीलियोस में वैसे तो आपका टीलियोस के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकते हैं. टीलियोस के का क्लासिफिकेशन भी अलग से आ सकता है. बट एयर सैक्स रेस्पिरेशन इन टीलियोस चूंकि आपके सिलेबस में है तो रेस्पिरेशन से शॉर्ट क्वेश्चन में ऑपरक्यूलम आ सकता है. गिल स्लिट्स, गिल की पोजीशन आ सकती है. गिल इन टीलियोस आ सकता है. बट एयर सैक्स इन टीलियोस इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट. देन इन एम्फीबिया द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबिया ये एक्सपेक्टेड है. देन you are having the question in amphibia origin and evolution of amphibia. तो origin and evolution of amphibia में बहुत सारे theories हैं. driving theory, you can any particular पूरी origin of amphibia पर full question भी आ सकता है या कोई एक particular theory of origin of amphibia you can always expect. Then general characters you can expect for the short question because amphibia is a very comparatively very small group of vertebrata or chordata. Then another the outline of classification of amphibia. Amphibia और reptilia का classification भी काफी comprehensive है. So you can always expect the short outline of classification of amphibia or outline of classification of reptilia. Then from classification part, as you have in your syllabus, you have synopsis of diversity. So classification part say you can always expect questions that certain examples you have been given like the frog, like the rabbit, like the rohu, katla, कोई particular fish और कोई particular amphibia, reptilia, इस तरह से 4-5 आ सकते हैं. And the question simply comes to classify the following. If इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो दैट इज वेरी यू शुड गो फॉर दैट. पूरी ट्राई कीजिए क्योंकि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन एक तरह से हो गया. दिस इज वेरी मार्क फेचिंग. ऑफ कोर्स ध्यान रखिए कि जब अगर किसी पर्टिकुलर जैसे रैबिट लिखा हुआ है या फ्रॉग लिखा हुआ है तो जब आप उसका क्लासिफिकेशन लिखिएगा तो टाइप जीनस एंड स्पीसीज में राना एंड टिग्रेना लिखिएगा या राना स्पीसीज लिखिएगा. Like that, you have to give the you have to reach up to the scientific name of that particular animal. So these are certain characteristics. Then in amphibia, then in mammal you are having, in reptilia you are having characteristic features and affinities of sphenodon. Sphenodon का characteristics पर भी अलग से short note आ सकता है. affinities पर भी short note आ सकता है. फुल क्वेश्चन में तो कैरेक्टर्स एंड एफिनिटीज स्पेनोडॉन बहुत इंपॉर्टेंट है ही. शॉर्ट नोट्स में ऑलवेज यू कैन एक्सपेक्ट आइदर कैरेक्टरिस्टिक्स और एफिनिटीज. देन इन टर्टल यू कैन एक्सपेक्ट सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मोस्टली यू कैन टर्टल के शेल पे क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड. टर्टल के क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन इज एक्सपेक्टेड. So these are few questions that we are in hurry and the most expected questions I am going on giving you as required by you, that is short answer questions. Then the in birds, parental care in bird, nest building in bird में nest building is a very important characteristics और बहुत खास phenomenon है. तो आप पर्टिकुलर नेस्ट बिल्डिंग पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और पर्टिकुलर एक किसी एक बर्ड का जैसे कि बया का नेस्ट बिल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट. काफ़ी सारे फीचर्स हैं उसमें, बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं. सो यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम नेस्ट बिल्डिंग. देन पेरेंटल केयर इन बर्ड, यू कैन गेट
the examples, any particular bird you can get, और उसमें पेरेंटल केयर कैसे पाया जाता है. ज़्यादातर एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन में वही होगा, क्योंकि पेरेंटल केयर इन बर्ड एज सच much important for the full question. Then in mammal is the dentition and aquatic mammal. तो dentition में dental formula पे आ सकता है, certain कुछ mammals का नाम दिया जा सकता है कि discuss their dental formula, or what is dental formula, what is dentition, what are the different types of teeth found in mammal. Then the development of teeth in mammal, you can get the short questions or diagram, draw a level diagram of a teeth or of developing teeth in mammal. Then the aquatic mammals. Aquatic mammals पर आप short note हर तरह से expect कर सकती हैं. Full question में aquatic mammal less expected है, but it is not that आ ही नहीं सकता है. Full question पे भी आ सकता है. और aquatic mammals में किसी एक particular mammal, aquatic mammal के example के साथ भी questions आ सकते हैं. Then is the next topic is comparative anatomy. Then within this comparative anatomy, you are having two important inclusions. First is integument and its derivatives. इसमें तो infinite questions you can get. What is integument? What is the structure of integument in chordates? What are the modifications of integument in chordates? The exoskeletal structure, endoskeletal structure. Then integument के derivatives में तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जिन पर फुल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में तो फेदर्स हैं, टाइप्स ऑफ फेदर्स हैं, कंटूर फेदर पर्टिकुलरली टाइप ऑफ फेदर दिया जा सकता है. देन हेयर्स हैं, hair, the position of hair in the different mammalian groups may be a short question. Structure and development of hair may be a type of question. Then are the scales. Reptilian scales are reptilian as well as fishes scales. Reptilian scales are the very peculiar type of scales जो हमेशा एपिडर्मल होते हैं. तो एपिडर्मल स्केल्स का क्या आ सकता है, रेप्टिलियन स्केल्स का क्या आ सकता है. Then then heart पर questions ज़्यादातर the chambers of heart से बहुत बार short questions आते हैं. Draw a well level diagram of any group of, like say the mammalian heart, amphibian heart, or the comparative study of heart of fishes and what amphibian. इस तरह से short questions you can expect. अदरवाइज कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ हार्ट अपने आप में एक फुल क्वेश्चन हो जाएगा, बट किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में हार्ट का कंडीशन या किसी पर्टिकुलर कंपैरेटिव टाइप ऑफ हार्ट्स इनटू वन और टू ग्रुप्स, in that way you can get the short questions from heart. And then kidneys में pronephric kidneys, mesonephric kidneys and metanephric kidneys अलग अलग short question में आ सकता है. मेटानेफ्रिक किडनी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है. सक्सेशन ऑफ किडनी क्या है, कंसेप्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ किडनी शॉर्ट क्वेश्चन में आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं. सो लाइक दीज यू कैन, दीज आर सम ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस. ऑफ कोर्स आई एम टेलिंग सम बिकॉज जो मेरे दिमाग में भी आता जा रहा है मैं बस वही आपको बोलती जा रही हूँ. और आई थिंक कि इसमें से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस इज द बायोडाइवर्सिटी. शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी इज स्टूडेंट्स, इट इज इन फैक्ट इट इज इनफाइनाइट. आप किस तरह से बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चंस कितने तरह के आ सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, द स्पेसिफिक पार्ट्स or the specific topics which are mentioned in your syllabus, from these you can expect infinite type of questions. So better to go through, if you have gone through properly through your syllabus of biodiversity includes concept of biodiversity, definition, significance and ecological role. ये अपने आप में चारों शॉर्ट क्वेश्चन में 5-5 नंबर के आ सकते हैं. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? 1,
What is the definition of biodiversity? 2. What is the significance of biodiversity? 3. And what is the role of biodiversity in ecological conditions or ecological systems or ecological areas? These are these four topics are themselves important for the short questions as well as long questions. Then biodiversity in biogeographical regions. So definitely, what are the biogeographical regions? That will be a short question. Then biodiversity conservation strategies may be a short question. Wildlife sanctuaries may be a short question. National parks, biodiversity hotspots, threats to biodiversity, ecological role of biodiversity, the difference between clean and deem in biodiversity. आपका syllabus में है biodiversity cleans in relation to area, latitude, attitude and deep sea. So the deep sea biodiversity, you may expect short question. Biodiversity in the latitude area, in area of diversity cleans. What are the different biodiversity cleans? Then other short questions are biospheres, biomes, ecological communities, biological communities, then biological biodiversity adaptations. Then the next topic is biodiversity in biogeographical regions. In this topic, you can expect geographical factors, biotic distributions, component of species diversity, then ecological habitats, species adaptations, then effect of geological changes on biotic distribution, distribution boundaries of flora and fauna. Then the last topic is biodiversity indicator or surrogate species. So from this, and this is a very interesting topic, surrogate species, किस तरह से species सरोगेट करके बायोलॉजिक बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करते हैं. तो इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकती हैं. व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, व्हाट आर द सरोगेट स्पीसीज, what are the umbrella species, what is the importance of biodiversity indicators or surrogate species, so what are the different types of surrogate species, या किसी particular species के बारे में mention किया हो कि how it is acting as an umbrella species or surrogate species. So these are some of the expected questions, short answer questions from your this coordinate and biodiversity paper 2, which makes carry full marks from 4 to 5. I expect it must be 5 marks each question. I presume, but you have to go through the question, and as I have already discussed, when you are answering for a short question that is carrying 5 marks, your answers length must be 1.5 pages, but that should not be in form of the general storytelling. That limit should contain the facts, and the answers must be to the point. So with this, I conclude this topic today. I hope it will benefit you, as you are having very less time. I think it is probably 1 or 2 days merely. So all the best, girls. Be to the do emphasize on to the point answers, and let's look forward for the particular. If other students, if you want any particular explanations or elaborations of any particular topic, who are having examinations in due course, not in so hurry, they always can put their questions.
So thank you, students. All the very best for your upcoming examination, which is in air. Exactly. Thank you very much. Do like, share, and subscribe my channel, and um, press the bell icon to get notified about my next video. You can always put the topics from BSc, MSc, or general topics for discussions in the chat box. Thank you. Thank you so much.